Welcome back, students. I hope you have already gone through the three parts that were uploaded prior. Now, today I have come up with part 4 for electricity, where we will be studying about Ohm's law. What is Ohm's law? What does it relate to? And what are the different numerical problems related to Ohm's law? What is its significance? Where do we use it? All that will be taken up in this video. So keep watching and try to understand the concepts very carefully. When we talk about Ohm's law, it relates potential difference applied across the ends of a conductor to the current produced in it, thereby meaning that potential difference which is applied to the ends of a conductor. If you have some wire is that conductor here. So across the two ends, whatever will be the potential difference applied, means whatever will be the battery voltage you will be supplying to it, that is related to the current which will be flowing through that conductor length. So how do we state Ohm's law? This is the basic part where it's been told that Ohm's law relate potential difference applied across the ends of the conductor to the current produced in it. Now, how do we state Ohm's law? So the statement is that current flowing through a conductor is directly proportional to the potential difference applied across its ends, provided that temperature like physical conditions remain the same. Temperature like conditions, because what happens, we have already in our previous classes we have studied that in case when some current is allowed to pass through a conductor, it heats it up. About the heating effects, magnetic effects, that in class 7th you have studied. So here when we talk about Ohm's law, this is a prerequisite that temperature conditions remain the same. So when the temperature conditions remain same, the current flowing through this conductor is directly proportional to the potential difference applied across its ends. Thereby, in mathematical form, it can be written as I is directly proportional to V. I refers to current, directly proportional to potential difference which is applied across the ends of a conductor. In case if you wish me to draw it with the help of a circuit, how we can show it with the help of a circuit? Suppose we have this as a conductor wherein in order to measure the current, we have a device called as ammeter attached in the circuit with a battery source which is providing us the potential difference. A key is there which is plugged in, and this completes the circuit. So the current flows from positive end towards the negative terminal. Thereby, according to Ohm's law, this current which is flowing through the circuit is directly proportional to the potential difference which is applied. This is V which is applied here, right? And the current which is flowing through this ammeter is, say, I. So current flowing through this conductor is directly proportional to the potential difference applied across the ends. Or we can write it as V is directly proportional to I. Now replacing this proportionality with equality, we need to introduce a constant. So R is the constant of proportionality or the proportionality constant, which is called as resistance of conductor. Very, very important point. अब इस पॉइंट को आप याद कैसे करोगे? रेजिस्टेंस का मतलब होता है किसी भी चीज़ के लिए एक ऑब्स्ट्रक्शन प्रोवाइड करना. ठीक है, ऑब्स्ट्रक्शन मीन्स रुकावट बनाना. सो वी नीड टू फाइंड आउट दिस वैल्यू ऑफ आर यूजिंग दिस पार्ट ओनली. वी इक्वल्स टू आई आर. इफ़ यू रिमेंबर, मैंने आपको एक बहुत छोटे छोटे हिंट्स बताए थे जिसमें वी हैव टेकन विर्क मैडम जो था वो V इक्वल्स टू आई आर, और यहाँ मैंने K क्यों लिखा छोटा सा कि आपको ये याद रहे कि ये R जो है दैट इज़ अ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट. सो दैट वाज फॉर कांस्टेंट पार्ट के आई हैव मेंशनड इट. Now using this part, if I want to find out the value of R can be written as equal to V upon I. V upon I. Now what is the significance of this value of R? R का सिग्निफिकेंस कैसे पता चलेगा? R का सिग्निफिकेंस हमें तब पता चलेगा इफ वी ट्राई टू प्लॉट अ ग्राफ. ठीक है, किंतु टू क्वांटिटीज के बीच में ग्राफ बनाओगे. बिटवीन द क्वांटिटीज वोल्टेज दैट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द एंड्स एंड
करंट विच इज़ फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। अगर हम वी और आई का ग्राफ बनाते हैं तो जो ग्राफ की स्लोप लाइन होगी, अब आप एक बार अगर भूल चुके हो तो मैं रिमाइंड करा देती हूँ। व्हेन वी टॉक अबाउट द स्लोप ऑफ अ ग्राफ, तो स्लोप का मतलब क्या होता है? इट्स वाई कोऑर्डिनेट डिवाइडेड बाय द एक्स कोऑर्डिनेट, सो इट्स अ रेशो काइंड ऑफ थिंग, रेशो ऑफ the quantity which is taken along y-axis, y-axis is the vertical one, to the quantity which is taken along x-axis, x-axis is the horizontal one. Now here if I draw it in this particular manner, नाउ बिकॉज अब आप सोच रहे हो मैंने ये दो क्यों बनाए, दो किस लिए बनाए? आपको मालूम है कि हमने v और i को रिलेट किया, v और i डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन का मतलब इट विल गिव अस अ स्ट्रेट स्लोपिंग लाइन, ठीक है, इट विल गिव अस अ स्ट्रेट स्लोपिंग लाइन। एक में मैंने v को लिया y एक्सिस पे, i को लिया x एक्सिस पे, एंड सेकेंड वाले में आई हैव टेकन अलॉन्ग y एक्सिस एंड v आई हैव टेकन अलॉन्ग x एक्सिस। इसको हम मेंशन कर देते हैं x एक्सिस, y एक्सिस, y axis and x axis, so that there is no confusion left now. अब हम अगर इस ग्राफ को स्टडी करें, here see when I have written r equals to v by I, for your hint I have mentioned v is to be taken along y axis and I is to be taken along x axis। ऐसा क्यों लिखा मैंने यहाँ? क्योंकि r अगर हमें स्लोप मिल रही है vi ग्राफ की, तो इसका मतलब है v हमारा y एक्सिस के अलॉन्ग है, आई हमारा करंट जो है दैट इज़ वी आर मेजरिंग इट अलॉन्ग एक्स एक्सिस। तो जैसे जैसे आप करंट की वैल्यू इंक्रीज कर रहे हो एक सर्किट के थ्रू, वैसे वैसे इसका मतलब क्या है कि वो प्रोपोर्शनल आ रहा है आपके पोटेंशियल के क्रॉस, आपको उसी रेशो में पोटेंशियल डिफरेंस भी आपका इंक्रीज होता जाएगा। जब आप प्रैक्टिकली ओम्स लॉ का सेटअप से करते हो तो देयर व्हाट यू डू, यू डोंट हैव द कंट्रोल ऑन दैट करंट वैल्यू। वहाँ पर हम करते क्या है, वहाँ पर हम वोल्ट मीटर्स की हेल्प से वोल्टेज वैल्यू चेंज करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस चेंज करते हैं। तो इसलिए उससे आपको लगेगा कि इसका मतलब हम तो क्योंकि वी को कंट्रोल कर सकते हैं तो वी इज़ दैट क्वांटिटी, द इंडिपेंडेंट वन, तो इट शुड बी टेकन अलॉन्ग एक्स एक्सिस, वाई इट इज़ टू बी टेकन अलॉन्ग वाई एक्सिस हियर, इट शुड हैव बीन दिस वे। कोई बात नहीं, हम इसको ऐसा बना लेते हैं, हमने इधर v लिया इधर i लिया। बट अगर आप ये ग्राफ बनाते हो और इसकी स्लोप निकालते हो, तो इस ग्राफ की स्लोप और इस ग्राफ की स्लोप, इन दोनों ग्राफ्स की जो स्लोप होगी दैट विल बी डिफरेंट, क्योंकि स्लोप का तो मतलब एक ही आना है कि क्वांटिटी अलोंग वाई एक्सिस डिवाइडेड बाय क्वांटिटी अलोंग एक्स एक्सिस। फॉर फर्स्ट पर्टिकुलर ग्राफ शेप हमारी स्लोप क्या आएगी? अगर मैं इस ग्राफ से स्लोप कैलकुलेट करती हूँ तो व्हाट विल बी द स्लोप? स्लोप विल बी गिवन एज वाई एक्सिस पे हमारे पास क्या है, आई विल चूज 2 पॉइंट्स हियर, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, 2 पॉइंट्स ले लिए, इनके करस्पॉन्डिंग दोनों y वाली वैल्यूज़ लिखी और दोनों x वाली वैल्यूज़ लिखी, correct? So in numerator portion I'll have a difference in voltage, and in the numerator part I have a difference in voltage, and in denominator it is the difference in the current values, क्योंकि I के along हमारे पास current था। Now V by I ratio, V by I as per the formula also, V by I is the constant part. According to Ohm's law, V by I was equal to the constant R, which is the resistance. So here resistance is nothing but the ratio of V to I. अब हमने जो सेकेंड ग्राफ बनाया उससे हमें क्या मिल रहा है, दैट इज द रेसिप्रोकल पार्ट। वाई एक्सिस पर लिया करंट, एक्स एक्सिस पर लिया हमने वोल्टेज का पोटेंशियल डिफरेंस, वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस। तो हम अगर इसको स्लोप निकालें इस पर्टिकुलर ग्राफ की, अगेन चूजिंग दीज 2 पॉइंट्स, इनके दोनों के वाई एक्सिस के डिफरेंसेस डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस के डिफरेंसेस, तो वी विल हैव आई बाय वी वैल्यू। आई बाय वी जो होगा दिस इज द रेसिप्रोकल टर्म, तो ये हमें देगा 1 बाय आर की वैल्यू। R is called as resistance and 1 by R is called as conductance. Very very important term. ये मैंने यहाँ क्यों बताई? Just keep it in your mind, put a star mark when you are preparing your notes for this. Reason being, this graph based question is generally asked either in MCQ form or in concept based question. आपको ग्राफ ये दिया होगा और पूछ लेंगे रेजिस्टेंस निकालो, तो आप जब स्लोप कैलकुलेट करोगे दैट विल गिव यू कंडक्टेंस, और कंडक्टेंस का रेसिप्रोकल लोगे तब आपको मिलेगा रेजिस्टेंस। और अगर आपको ग्राफ वैल्यूज में डायरेक्ट दिख रहा है कि v और i ही मेंशन है, v along y एक्सिस, i along x एक्सिस, देन स्ट्रेट फॉरवर्ड द स्लोप विल टेल यू द रेजिस्टेंस वैल्यू। So this is an important point to note. Please put a star mark in your notebook too for the same.
नाउ कमिंग ऑन टू द यूनिट्स, मैंने एक पॉइंट यहाँ पर लिया था बहुत इंपॉर्टेंट कि इनिशियली दिस वाज ओम्स लॉ. So as you all are well aware, whenever people who are contributing to different important facts or different important statements, in order to honor them, we generally provide those particular quantities as the units with their names. Okay, so the person or the scientist who was related and associated with this Ohm's law was George Simon Ohm. His name was George Simon Ohm. You can be asked this question also. So George Simon Ohm. George Simon Ohm was the person who was associated, who was the one who defined Ohm's law. So in order to honor him, for this constant of proportionality, that was R, resistance value, resistance is defined in terms of ohms. Ohm is the SI unit of resistance, and the symbol for ohm is this one. It is ohm. This is the symbol for ohm. Now the point comes, how do we define 1 ohm? 1 ohm कितना होगा? हमने अपनी पिछले वीडियोस में भी जब डिफाइन किया, 1 एम्पियर को डिफाइन किया, 1 कूलम ऑफ चार्ज को डिफाइन किया, तो यूनिट वैल्यूज को डिफाइन करने के लिए वी टेक एंड रिलेट इट फ्रॉम द फॉर्मूला पार्ट विद द अदर टू वैल्यूज इन यूनिट टर्म्स ओनली. अगर आपको 1 ओम डिफाइन करना है तो आप उसको 1 वोल्ट और 1 एम्पियर, क्योंकि वोल्ट किसकी यूनिट है? पोटेंशियल डिफरेंस की. एम्पियर किसकी यूनिट है? करंट की. सो आप अगर इन दो वैल्यूज़ को यूनिट वैल्यूज़ ले लोगे तो आपके पास 1 ओम की डेफिनेशन रेडी हो गई. नाउ इन लैंग्वेज हाउ दिस इज टू बी रिटन. 1 ओम. 1 ओम is the resistance offered by a conductor through which 1 ampere of current flows on applying 1 volt of potential difference across its ends. Am I clear? I'm just repeating this so that you get a better idea for the same. So 1 ohm is the resistance offered by a conductor when on application of 1 volt of potential difference allows 1 ampere of current to flow through the conductor. That gives us the value for 1 ohm. 1 ohm is the resistance offered by a conductor when application of 1 volt of potential difference allows 1 ampere of current to flow through it. Next, coming on to the resistance part, this which we have just studied. कि resistance का symbol capital R, उसकी unit ohm. Okay, let's take a recap for today's part. हमने एक formula पढ़ा according to Ohm's law. V equals to IR. V equals to IR. Thereby, taking a recap, कि we know current flowing through the circuit is directly proportional to the potential difference applied across its end, provided the temperature conditions remain the same. And when the constant was, when that proportionality sign was replaced or removed, a constant of proportionality resistance comes into play. Resistance means obstruction to the flow of current. अब नॉर्मली हम इस फॉर्मूले से क्या करें? देखो, कभी कई बार क्या होता है, आप कंफ्यूज हो जाओगे आप डायरेक्ट अगर लिखने लगे हो. डोंट गो हेड विद दैट पार्ट. इट्स अ वेरी सिंपल ट्रिक. आप सबसे पहले फॉर्मूला यही लिखो, ओम्स लॉ की स्टेटमेंट वाला, विर्क वाला जो फॉर्मूला है कि आर इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी. सो वी इक्वल्स टू आई आर. फ्रॉम हियर आई निकालना है तो फटाफट से कर दिया वी बाय आर. आर निकालना है तो फटाफट से वी बाय आई हो गया. तो आपके पास आर आई, जस्ट सिंपली बाय ट्रांसपोजिंग द टर्म्स. वी इज इन वोल्ट्स, I is measured in, it is current, it is measured in amperes. R is the resistance which will be measured in the units, which is ohms. I hope these parts are clear. Now for the numericals which are based on Ohm's law. Ohm's law pe based numericals will be using these three formulas either directly or indirectly. Indirect formula parts mein what else could be the point which can be introduced here. इनडायरेक्ट वे में आपको हो सकता है आई पहले निकालना पड़े. कैसे? हम अपने पुराने फॉर्मूले यूज़ करेंगे. कौन कौन से फॉर्मूले? हम टेकिंग इट Q इक्वल्स टू आई टी, देन यस एनी, गुड, Q is equals to any, so we have any is equals to IT. If you are given
the charge and time, relating these two, we can find out the value of I and then use Ohm's law. If you are given the number of electrons passing in a given time interval, then you will be using N into E. What was the value of E if you remember? It was 1.6 into, yes, 10 raised to power minus 19 coulombs. So this is the charge on one electron. Relating these two formulas as a prerequisite, मतलब it is like maybe अगर direct नहीं दिया है current value, तो इन दो formulas को use करके you will first find out the value of I, और अगर आप I निकाल लोगे तो V और R में से numericals में आपको एक चीज़ given होगी और दूसरी calculate करनी होगी. So for that we can use these kind of formulas. Now more about the numerical portion. Basically the numerical portion relating to Ohm's law and the resistance calculations. कि how do we calculate resistance when it is a single resistor in the circuit, या कौन से factors हैं जिनके ऊपर ये resistance depend करता है. So talking about the factors on which this resistance depends, this is what I will be taking in my next class. So for today's lesson, it was the Ohm's law का formula, unit for resistance, that is ohm. So today we studied about a term resistance. अब अगले लेक्चर के लिए, अगली क्लास के लिए, what you need to remember is कि ये जो resistance है ना, ये एक तरीके से हमें रुला देता है क्योंकि ये हमारे रास्ते में obstruction create कर रहा है. आपको बस ये चीज़ ध्यान रखनी है, resistance क्या कर रहा है, ये हमें रुला रहा है. अगला फॉर्मूला मेरा रोने से रिलेटेड आएगा मगर सुनने के बाद बहुत हंसी आएगी, and hopefully you will get to understand the numericals which will be based on resistance and the various factors which are related to resistance. Till then, keep learning and keep watching the videos. Do subscribe to the channel.